हेलो स्पिरिट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 30 नवंबर 30 नवंबर 2024 को। और इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन बर्न clay brick class has the highest compressive strength, that is the class 35? Option number A is the correct answer. Question number 1. Question number 2, during a slump test for a concrete workability on a site, the slump is measured as 150 mm. According to IS 456-2000, the workability of this concrete is classified as high. Option number B is the correct answer यहाँ पर रहेगा. A concrete mix design for a high-rise building in a Delhi specific a water cement ratio of 0.4 given a water cement of 200 kg per meter cube. What is the corresponding cement content in this particular mixture? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 500 kg पर मीटर क्यूब. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपसे पूछा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन अ स्टील अज्यूम्ड लीनियर इलास्टिक बिहेवियर. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी आपकी 25 मेगा MPa. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टैंड stratum has an in situ void ratio of 1/2. Its porosity, इसकी पोरोसिटी कितनी होगी? इसकी पोरोसिटी होगी 1/3. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग इन चेन्नई, ordinary Portland cement is being used according to IS 269-2015. What is the minimum initial setting time required for the cement to ensure proper placement and finishing of concrete? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 30 minutes. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, Targazi bearing capacity theory assumes a strip footing subject to vertical central loading. The other relevant condition assumes to derive the ultimate bearing capacity of the footing in this theory are प्लेन स्ट्रेस एंड जनरल शेयर फेलियर. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर मिलेगा, द मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड पर मीटर विद द विड्थ ऑफ स्लैब अज्यूमिंग द लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर इज 0.12 ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. Question number 11. You are conducting a theodolite survey, transverse survey in a crowded urban area in a busy city. Which type of error is most likely to be significantly affect your angular measurement? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नेचुरल एरर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 9. एज पर द फिलोसफी ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन, it is envisaged by the designer that structure as a whole or a component thereof must not obtain any limit state considered in design. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का. क्वेश्चन नंबर 12, while setting up a theodolite for a survey, you notice that vertical axis of the instrument is not truly vertical. What is this called error? ये एरर किस टाइप का है? दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल एक्सिस एरर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 10, reciprocal ranging is used in a chain surveying in situation where there is a obstacle in ranging but no obstacle in chaining. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का. क्वेश्चन नंबर 13, in a theodolite survey you are measuring the horizontal angle between 2 points
you are take two set of readings, one with the telescope in the facelift position and another with the telescope in the face right position. What is the purpose of taking these two set of readings in both the positions? So 13 क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टिकल एक्सिस. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. You are conducting a closed transverse survey around a lake using a theodolite. After completing the survey, you find the sum of interior angle is not equals to 2n minus 4 angles, where n is the number of sides of the transverse and what is the discrepancy called. What is this discrepancy called? This discrepancy is called as the angular misclosure. Option number B is the correct answer यहाँ रहेगा. Question number 17. Both plum fork and spirit level are used to carry out the plane table survey. Option number C is the correct answer यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17 में. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है जिसमें RL दिया हुआ है बेंचमार्क का एंड ऑब्जर्व इतना डिस्टेंस दिया गया है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 105.005 मीटर. ऑप्शन सी. Question number 18. Which reading is most likely to be free from personal error in the survey? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 97.675. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 16. Water treatment plant is experiencing difficulties in removing fine sand suspended particles from the raw water during monsoon. Jar tests are being conducted to optimize the coagulation flocculation process. Which of the following observation during the jar test would indicate effective coagulation? So यहाँ पर होगा rapid settling of large and dense flocks. Option number A correct answer रहेगा. Question number 19. A construction project required the use of pozzolanic cement for a marine structure. What impact does the addition of pozzolana have on the property of the cement, particularly in the relation of strength, development and setting time as per IS 1489/2015? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका प्रोड्यूसिंग अर्ली स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम. ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. A solid circular shaft of diameter d is subjected to a torque T. If the diameter of the shaft is double while keeping the torque constant, the maximum shear strength or shear stress induced in the shaft will be, so it will be the decreased by the factor 8. Question number 23. For a state of pure shear with tau xy is equals to 50 MPa, प्रिंसिपल स्ट्रेस वुड बी. तो यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा वो होगा सिग्मा 1 50 मेगा MPa एंड सिग्मा 2 -50 MPa. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 21. अ पॉइंट इन अ structural member is subjected to a biaxial stress state with sigma x 100 MPa tensile or sigma y 50 MPa compressive. What is the radius of Mohr circle representing this state? So 75 MPa is the correct answer. Option number C. Question number 24. A thin walled cylindrical pressure vessel with a radius of 500 mm and wall thickness 5 mm is subjected to the internal pressure of 50. The maximum shear stress of this material of the vessel is 250 MPa. That is option C is the correct answer यहाँ पर रहेगा. Question number 22. A plane stress element is subjected to sigma x 50, sigma y -30 and sigma xy 40. What is the orientation does the maximum shear stress occur in a Mohr circle? So ये होगा आपका 45 डिग्री. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. Two circular shaft, one solid and one hollow, have the same external diameter.
are subjected to the same torque, which shaft will experience the maximum higher maximum shear stress. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हॉलो. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26. A point in a material is subjected to a stress state where the normal stress on two mutually perpendicular planes are equal in magnitude but opposite in sign, and there is no shear stress on these planes. What is the most appropriate name of this particular stress state? This is called as a pure shear. Option number D is the correct answer. A saturated specimen of a highly plastic clay is tested on a triaxial apparatus in UU condition. The untrained angle of the shear stress on the clay will be generally obtained as a 0. Option number D is the correct answer. Question number 29. Question number 27. A cantilever beam of length L is subjected to a hogging movement at at its free end. The shape of bending movement will be rectangular with height m and base width L. Option number D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. A cantilever beam of length L having a flexural rigidity of EI loaded by a load P at its free end is causing a deflection of 5 mm at its free end. Another cantilever beam of length 2L has a flexural rigidity of 2 EI and is loaded by a load 2P at its free end. The tip deflection of the second beam will be the 40 mm. Option number C यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. A simply supported beam of length L is subjected to a concentrated load P at the distance E from the left support. The reaction at the support will be, तो रिएक्शन होगा यहाँ पर कितना, PA upon L. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. The modulus of elasticity E of M25 concrete as per recommendation by IS 456 2000. So it will be the 25,000 MPa. Option number C is the correct answer. Question number 32. Which of the following statement best defines hyetograph? Hyetograph is a graph showing the variation of rainfall intensity with the time. Option B यहाँ पर होगा correct answer. Question number 33. Manning's formula is commonly used to estimate the. So it is commonly used to estimate the velocity of flow in an open channel. Option C is the correct answer. Question number 36. The standard unit of measurement for paint work in a civil work is painting quantity in a civil work is a square meter. Option C is the correct answer. Sorry. Question number 37. Identify the wrong statement. Wrong statement यहाँ पर क्या है? Different types of vehicles like cars and trucks are counted by their respective exact number in traffic volume study. ये गलत है आपका. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following numbers characterized the flow regime in a pipeline? So 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रेनॉल्ड्स नंबर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. Which of the following conditions are true in a supercritical flow regime? So that is Froude number is greater than 1 and depth is less than critical depth. Option B is the correct answer रहेगा. Question number 38. A sewage treatment plant receives wastewater with a high concentration of organic matter. Which of the following parameters is most commonly used to assess the strength of this sewage and its potential to deplete dissolved oxygen in receiving water bodies? Is BOD. Option B is the correct answer. The presence of which of the following contaminants in drinking water would be the major concern due to its potential to cause a blue baby syndrome in infant is that is the nitrate. Option D is the correct answer. Question number 39. Okay, now coming to the question number 40.
Grain size distribution of a silty clay reveals that the coarse fraction can be classified as a poor graded sand, and the fine part through the 75 micron sieve was 7%, and the plasticity characteristics of the fine part reveal its symbol ML. The symbol of the silty sand as per the Indian standard will be, so this will be the SPML. Option number D is the correct answer. Question number 40. Next question is question number 41. Pact of Future recently in news, which was adopted by the organization that is UNGA. Option number A is the correct answer. 44. In which Indian state is the Flamingo Festival celebrated? Flamingo फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, आंध्र प्रदेश. 47 ऑप्शन नंबर 44 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 45 number question. Which of the following countries has the recently launched world's first fourth generation nuclear reactor? So this is the China. Option number C यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 42. The tallest statue in the world, the Statue of Unity, is located near which dam? So it is located near the Sardar Sarovar Dam. Option B is the correct answer. Which of the following is the largest national park in the India? It is Hemis National Park. Hemis, option C is the correct answer. Question number 43. Which of the following Indian state is known as a land of five rivers? That is Punjab. Option B is the correct answer. Question number 46. Which Indian hockey player won the International Hockey Federation Player of the Year 2024? So 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज हरमनप्रीत सिंह. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. 48 number question. Which institute has developed the new biodegradable form to address plastic waste in packaging? So this is the IISc Bangalore. Option B is the correct answer. Monkeypox virus belongs to which of the following virus viral family? That is from the pox viridia. That is option D is the correct answer यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करें तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी? दैट इज द स्काई रूट एरोस्पेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 54 number question. Which one among the following is the second step of Ashtanga Yoga? So this is the Niyama. That is option D is the correct answer. Question number 54. Now coming to the question number 50. 50 number question में आपसे पूछा है which of the following schedule of the Constitution of India deals with the union, state and concurrent list? So this is the 7th schedule. Option number C is the correct answer. Now coming to the question number 51. Who among the following was the first ever badminton player from India to clinch an Olympic medal? So this is N. Saina Nehwal. Option A is the correct answer. Which of the following book is the autobiography of Dalai Lama? So this is Freedom of Exile. Option D is the correct answer. Option D. Question number 55. Option number D is the correct answer. Which of the following historical Tibetan monasteries in Arunachal Pradesh was founded in the 17th century by Mirik Lama? That is Tuang Monastery. Option D is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 का. Now coming to the 52 number question. Which of the following mountain range forms the northern boundary of the India? So that is the Himalayas. Option number C is the correct answer. What is the Cadwell 45 recently highlight in the NASA? ये क्या है? दिस इज अ स्पायरल गैलेक्सी. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58. What was the theme of the World Space Week 2024 celebrated from the October 4 to 10? So इसकी जो थीम थी दिस वॉज द स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हु रोट किताबत मंजरी एंड लीलावती, द टू मास्टरपीस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? So this is written by the Bakul Kayastha. That is option C is the correct answer. Question number 63. From which country the method of impeachment of the President of India is adopted? So यहाँ पर जो correct answer होगा USA. Option A is the correct answer. Which of the following district was separated from the Assam
and given to the Pakistan. So this was the Sylhet. Option number C is the correct answer. SMTP is a networking means. SMTP का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर. Question number 60. By which of the following amendment was Sikkim made the full-fledged state of the Indian Union? So 60th question का correct answer होगा 36th amendment. Which of the following states are famous for the Valley of Flower? Valley of Flower is called as the Uttarakhand. 66th number question. 3 George Dam recently mentioned in the news is located on the which river? So 66 का correct answer होगा यहाँ पर Yangtze River. Option C is the correct answer. The Constitution of India has borrowed the fundamental duties from which of the following country constitution? So 67, that is USSR, that is Russia. Option B is the correct answer. Question number 67. Question number 62. Itur Nagaram Wildlife Sanctuary was in news recently. It is located in which state? So it is located in the Andhra Pradesh. Option number B is the correct answer. ठीक है. सॉरी 62. ओके नहीं सॉरी 62 आंध्रा नहीं है, तेलंगाना है. ठीक है, तेलंगाना रहेगा. ठीक है, नॉट आंध्रा. 62 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 63 पे आते हैं. सॉरी 63 हो चुका है. 68 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द easternmost states and westernmost states? So these are the Arunachal Pradesh and the Gujarat. Option D is the correct answer. Question number 68. Question number 69. National income estimated in India are prepared by the Central Statistical Organization. Option C is the correct answer. Question number 69. 70 number question. Where is Bandipur National Park located? That is located in the Karnataka. Option B is the correct answer. Choose the correct statement. Okay. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है 73rd में. दैट इज एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट एंड सबमिट द असाइनमेंट ऑन मंडे. ये आपका करेक्ट रहेगा. आई थिंक ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया. चलिए कोई बात नहीं. ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग. 70 हो गया. ये फिर आपके जो है ना इंग्लिश के क्वेश्चन हैं. ठीक है, 70 तक तो हो गया हमारा जीके करंट अफेयर बेसिकली. देन दीज आर द इंग्लिश क्वेश्चन. इंग्लिश क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा भाई. ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे. ठीक है, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस. तो यहाँ पर देखिए 1 to 40 क्वेश्चंस हमने बात करे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के थे. एंड 41 to 70 हमने बात करे हैं तो जीएस के थे. ठीक है, बाकी 71 to आपके 100 क्वेश्चंस जो हैं ये 30 क्वेश्चंस दीज आर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पेपर की जो था हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए. ये एग्ज़ाम हुआ है आपका लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर. ठीक है, और ये एग्ज़ाम हुआ है 30 नवंबर को. इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.